Hello students, welcome to my channel. Today I will explain you chapter 14 of NCERT Maths book of standard 3rd. Okay, so the chapter is rupees and paise. So let's turn the book. Okay students, I hope you all have turned your page and turned page for chapter 14 of your NCERT Maths book. That is page number 190. The name of the chapter is rupees and paise. You all know what is rupees. It is the currency which is used in our country. Okay. So now let us begin with the chapter. You have to learn about money in this chapter. But आपको money पढ़ना है but lightly. You have to study about money, but first of all go through the activities which has been explained here. पहले आप इन सारी एक्टिविटीज़ को करो. आप खेलते खेलते मनी के बारे में पढ़ने लगोगे, जान जाओगे. Okay, so see what has been written here on the page. Let me start my discussion. I have collected a lot of coins, but I don't have a purse. Let us make money purse. So see, you can see here the students are talking कि उनके पास एक मनी पर्स नहीं है और उन्होंने बहुत सारा coins collect किया है. Okay, so now see both of them are talking कि let us make a money purse. अभी हम लोग एक money purse बनाएंगे. So here's the activity. So according to it, if you will follow these steps, you will got a result and you will get this money purse. So now see what you have to do. What are the steps? Here the steps are: take a sheet of paper and make a fold at the center. Similarly, this is the sheet of paper and you have to make a fold over here. Now find the two corners A and B to meet the dotted lines. So this is the dotted line and fold the corners to meet these dotted lines. And after folding, your sheet will become like this. Okay, now the sheet will look like this. You can see here. Now fold the top part of the sheet backward, show that the back of the sheet looks like this. Okay, like this. Now next is and front look like this. Whenever you will fold this part, ये वाली जो part है ना, इसको अगर आप पीछे की ओर fold करोगे तो पीछे ऐसा दिखेगा और उसका आगे वाला portion ऐसा दिखेगा. Now you can see this face. Place the front side of the sheet up and fold the A's, CD and EF to meet at the dotted lines. Okay, now it will look like this. After that, the shape of the page will look like this. Now come to page number 191. Here you can see, fold down the top along the dotted line so that the figure now look like this. Again, after folding, your paper will look like this. Fold the back flap down and the money purse is ready. Now fold the back flap down and the money purse is ready. ऐसा money purse आपका बन जाएगा. Now after making money purse, what you have to do? There is an activity to make coins. Okay, so this is also very easy. आई होप यू ऑल हैव ट्राइड. आपने बचपन जब आप बचपन में तो आप भी हो ही, आप कभी ना कभी कॉइन्स ज़रूर बनाए होंगे. अगर आपने नहीं बनाया, इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक कॉइन्स एंड हियर आर द स्टेप्स विच हैज़ बीन रिटन है. कलेक्ट डिफरेंट कॉइन्स, मनी फॉर आवर पर्स. अभी इस पर्स में डालने के लिए आपको कुछ मनी भी तैयार करना है. फॉर दैट कलेक्ट डिफरेंट कॉइन्स, कीप अ कॉइन ऑन अ फ्लैट टेबल, प्लेस अ थीन पेपर ऑन इट. With one hand, hold the paper tight, rub the tip of the pencil over the paper slowly to trace the coin. Slowly, the face of the coin will appear. Cut out the traced coins and keep them in your purse. So, आपको ये जो coin बनानी है, उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक coins चाहिए, pencil चाहिए और एक thin paper चाहिए. So, I am having a coin of 2 rupees. Okay, and let us make this on the page itself. मैं अभी इसी पेज पे आपको ये 2 rupees की coin बना के बताती हूँ. I have kept my coin over here. ये जो white part है ना, यहाँ पे मैंने इस coin को डाला है. Now I am using my pencil. And with my pencil I will show you that how will you get this coin. ये मेरी कॉइन्स थोड़ी हिल जा रही है, इसलिए शायद ये
करेक्ट नहीं हो पा रहा। ओके सी, मैं दूसरी बार ट्राई करती हूँ, जस्ट मिनट। Now you can see easily I have tried both my hands and I got this 2 rupees coin. आपको यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, दिस वन, ये 2। ओके, सो इसके पीछे मैंने यहाँ पे 2 रुपीज़ का कॉइन रखा था एंड आई यूज्ड माई पेंसिल एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई गॉट दिस कॉइन। ओके, तो आपको ऐसी ही कॉइन्स बनानी है आपके रफ पेज पे यानी वाइट शीट पे, एंड देन आफ्टर कट दिस कॉइन्स एंड पुट इट इन योर पर्स। ये आपकी ये सेकेंड एक्टिविटी है विच इज़ ऑन पेज नंबर 190। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द नेक्स्ट 2 पेजेस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।